Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to this session. So today's in this session, I will be discussing all about NABARD grading. What is the expected exam date for this year? What is pattern of this exam? Then syllabus क्या है exam का? Then what is the eligibility criteria, whether you are eligible or not for this exam, and also cutoff क्या रहती है and strategy क्या होनी चाहिए आपकी most important strategy for this NABARD grade examination. So today in this video I will be discussing all these things, and through because we know that many aspirants are there who wanted to prepare for NABARD grade A, but they are like कि यार पैटर्न क्या होता होगा इस एग्जाम का, कितने सब्जेक्ट आते हैं, क्या सिलेबस क्या है एग्जाम का, देन एम आई एलिजिबल और नॉट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मेनी ऑफ यू वांट कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए फॉर क्लियरिंग दिस NABARD grade examination, right? So that is why I have come up with this video, and through this video I will be telling you all about this. But before starting my video, I have an announcement that we have launched a comprehensive NABARD guidebook for you, which is your one-step solution to all your queries regarding NABARD and NABARD examination. Not only that, it will provide you the decoded syllabus as well as PYQs, which you can refer to see that what kind of questions are being asked in NABARD reading. And also it will provide you the strategy and resources to crack this NABARD grade A examination, and that too for free. Yes, you can avail all this information for free, and for that you have to go to the description box, click on the link, register yourself and avail this guidebook for yourself. ठीक है, तो ये रही guidebook की बात. Very important guidebook for you. If you want to have some information with in hand, so आप इसको easily download कर सकते हो, right? चलो, तो आप आज की वीडियो पे आ जाते हैं, आज के टॉपिक पे आ जाते हैं. सो सबसे पहले आई विल बी टॉकिंग अबाउट द एग्जाम डेट. ठीक है, कि क्या एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट रह सकती है इस साल की. सो स्टूडेंट्स, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि आपका अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन रिलीज होता है, ठीक है, देन यू कैन एक्सपेक्ट दैट एट द मिड ऑफ अक्टूबर आपका प्री हो जाएगा. ठीक है, मिड अक्टूबर में आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम है जो NABARD grade A का, वो हो जाएगा, वो कंडक्ट हो जाएगा. सो इट इज़ अ हाई टाइम नाउ, and I request you all कि आप अपने you pull up your socks and just start preparing for the exams. तो ये तो हो गई एग्जाम डेट की बात. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जाम. ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है. बेसिकली दिस एग्जाम इज बीइंग कंडक्टेड इन 3 phases: phase 1, phase 2 and interview. ठीक है, phase 1 is preliminary, phase 2 is mains, and then there is a interview. अब phase 1 का पैटर्न क्या रहता है, let us discuss that. So in phase 1 there are 8 subjects that is being tested by NABARD, and out of these 8 subjects they have divided them into non-merit section and merit section. So out of these, the 5 are non-merit section: your reasoning, English, computer knowledge, quantitative aptitude and decision making. These are non-merit section. ठीक है, and rest your GA, ESI and ARD is your merit section. So what is the difference between this non-merit and merit section? Basically in non-merit you just need to clear the minimum cutoff of individual subject, while in your merit section not only you have to clear the minimum cutoff of individual subject, but also you have to clear the overall cutoff as well. ठीक है, and there will be 200 questions of 200 marks, and it can be given in Hindi as well as English language. So it can be bilingual. So according to your choice, according to your suitability, you can give the paper both in English as well as Hindi as well. Okay, except the test of English language, rest subject can be given in both the language. And also the time duration is 120 minutes. This is the time duration which is allotted to you, and within this 120 minutes you have to complete your all the subject, or your all 8 subject should be done within your 120 minutes. ठीक है, so this is the pattern of preliminary examination. Now talking about mains, so in mains there are basically 2 papers. The paper 1 is general English, which is online descriptive test. Now what is the meaning of online descriptive? Basically here you have to type the answer. The system which is provided you in the examination center, there you will have the keyboard and you have to type the answer in the keyboard and then give the answer, right? So there will be 3 questions from English, which can be your précis writing, letter writing, reading comprehension, essay writing. Okay, such question can be asked, and the marks allotted is 100 minutes, 100 marks, and 90 minutes time duration is 90 minutes which is being allotted to you. तो ये तो रही पेपर 1 की बात कि पेपर 1 जनरल इंग्लिश का होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, 90 मिनट्स के. ठीक है, and talking about paper 2, see, if you are applying from journalist post, then paper will be of ESI and ARD. ठीक है, then question from ESI and ARD will be asked to you. And the good thing about journalist post is that
आप ESI और ARD यू आर ऑलरेडी कवरिंग इट इन द फेज 1 ऑल्सो, राइट? सो यहाँ पे आपको थोड़ा ईजी हो जाता है कि आपकी प्रेपरेशन ऑलरेडी फेज 1 में हो गई है ESI इन ARD की. So this is the advantage for journalist post. But if you are someone who is applying from specialist post, then your subject specific question paper will be there in phase 2. ठीक है, paper 2 of phase 2. Now the combination of questions will be objective as well as descriptive, and there will be 30 objective questions of 50 marks, and 6 question will be of 6 descriptive question, out of which you have to do the 4 questions and they will be of 50 marks. ठीक है, time duration for your objective is 30 minutes and time duration for your descriptive is 90 minutes. ठीक है, so that is the phase 2. Now you will be like how this 30 question is distributed, how this 50 marks is distributed to 30 question. So basically for objective, 20 question will be of 2 marker and 10 question will be of 10 marker. That will be completing your 50 marks for objective, and for subjective 2 question will be of 15 marker and 2 will be of 10 marker. That is completing your 50 again. ठीक है, so this is the marks distribution for your paper 2. Now clear? So phase 1 कैसा होता है, phase 2 का pattern कैसा होता है, I think this is clear to you. Now talking about कि अब आपकी जो final merit बनती है वो किससे बनती है. For once you have cleared the phase 2, you will be called for interview, and the marks you scored in phase 2 plus interview, that will be counted for your final selection. ठीक है, फाइनल सिलेक्शन उस बेस पे होगा जो भी आपके मार्क्स आपने स्कोर किया है फेज 2 एज वेल एज इंटरव्यू में. ठीक है, तो ये तो रही एग्जाम पैटर्न की बात. कितने फेजेस होते हैं, क्या कितने क्वेश्चन होते हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन होता है, कहाँ कैसे मार्क्स होते हैं. सी, फेज 1 के मार्क्स आर नॉट कंसिडर्ड, ओनली फेज 2 एंड योर इंटरव्यू मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे विल काउंट फॉर योर फाइनल सिलेक्शन. ठीक है, so that was all about the pattern of this examination. Now let us discuss syllabus. So we have seen that quants, reasoning, English, computer knowledge, decision making, journal awareness, ESI and ARD is asked in phase 1, is being tested in phase 1, while in your phase 2 descriptive English is an additional. Rest, if you are applying from journalist, ESI and ARD is common. Otherwise for a specialist post, your subject specific question will be there, your subject specific question paper will be there. ठीक है, so this is the syllabus, this is the general syllabus. Now let us see one by one कि ARD का syllabus क्या है, ESI का syllabus क्या है और rest और सारे subject का syllabus क्या है, right? So first of all talking about ARD, so this is the syllabus of ARD and I have taken the syllabus from the NABARD notification of 2022. ठीक है, so this was taken from there and you can see that you have to you have to study general agriculture, soil and water conservation, then water resources, farm and agriculture engineering, horticulture, plantation and horticulture, animal husbandry, fisheries, forestry, agriculture extension and climate ecology and climate change. ठीक है, थोड़ा सब्जेक्ट वास्ट है, थोड़ा सिलेबस वास्ट है, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए बिकॉज ARD इज इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 1 एज वेल एज फेज 2. ठीक है, दैट इज इट इज इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए, आपको कमांड होनी चाहिए ARD के ऊपर. Talking about ESI, so basically ESI for ESI another important because it is also asked in phase 1 and phase 2 as well. So ESI का syllabus ये है and जितने भी topics इसमें दिए गए हैं, all the topics given in syllabus are very important. ठीक है, तो ये static के लिए भी important, ESI static के लिए, and all the current affair related to these topics are very important for your ESI current. ठीक है, so ये आपका सिलेबस हो गया ESI के लिए. सो दैट इज अबाउट द मेरिट सेक्शन. अब हम नॉन मेरिट सेक्शन की अगर बात करें तो फॉर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दिस इज योर सिलेबस, दो द सिलेबस इज नॉट गिवन इन NABARD notification but we have arranged it. So this is the syllabus for your quantitative aptitude and out of this the first few important, there are the first few topics are very important because number of questions asked from these are more as compared to the rest of others. ठीक है, for reasoning this is the syllabus and for English for phase 1. ठीक है, for phase 1 English these are the important topics which you have to practice. So ये हो गई QRE की बात. And talking about the other subject that is computer awareness, so here's the list of your computer awareness topics that are important for your exam, and for decision making you have to read all these topics. ठीक है, talking about phase 2 के English that is descriptive, you have to practice essay writing, reading comprehension, precis writing and letter writing. These are very important. ठीक है, so this was the overall syllabus of NABARD grade A. आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या important topics हैं and all. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द एलिजिबिलिटी. अब एलिजिबिलिटी पे भी बहुत सवाल होते हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, राइट? सो बेसिकली फर्स्ट
is the thing is that you should be Indian first. Nationality, your nationality should be Indian for being eligible in NABARD grade A, and there is no limit on attempt. ठीक है, आप कितने भी attempt दे सकते हो NABARD grade A के. अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो यू मस्ट हैव योर बैचलर डिग्री विद योर सेल्फ विद मिनिमम 60% एग्रीगेट. बैचलर में आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए. एंड इफ यू हैव डन मास्टर्स देन देर इज अ 50% aggregate. There is a eligibility of 50% aggregate. If you have done the PhD, then no such criteria is there. You can just simply go for filling the form and sitting in the NABARD grade A examination. ठीक है, so एक qualification होगी. And I was talking about the unreserved category, and if you are belonging to SC ST someone, and there is a relaxation there. ठीक है, so you can refer to the notification and you can see that there is a relaxation for SC ST and PWBD aspirants. If we talk about the age qualification, age eligibility, so the age is 21 to 30 years. ठीक है, now you will be like कि 30 years कब तक? So NABARD अपने नोटिफिकेशन में हर साल डेट देता है. यू हैव टू मैच योर एज अकॉर्डिंग टू दैट डेट, एंड देन यू हैव टू सी दैट ओके वेदर यू आर एलिजिबल, वेदर यू आर कंप्लीटिंग योर 20 years और वेदर यू आर कंप्लीटिंग योर 30 years टिल दैट डेट. ठीक है, तो वहाँ से आपको मैच करना है. वहाँ से यू हैव टू सी दैट वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट फॉर NABARD grade A. In age, there is a relaxation for SC ST of 5 years, and for OBC aspirants it is 3 years, and for PWBD it is 10 years. ठीक है, so NABARD has clearly mentioned it in the notification as well. So अगर आपका notification आता है and you have any doubt, refer to the notification. ठीक है, वहाँ पे सब कुछ clearly mention है. So this was all about the eligibility. Now let us discuss about the cutoff. ठीक है, cutoff क्या रहती है generally. So अगर हम 2021-22 की बात करें, so this is the list of cut, this is the cut off for phase 1. ठीक है, phase 1 में जो different subject है उसकी cut off ये रही. So आप देख सकते हो quants में 2022 में it was 3, for reasoning it is 3.75, for English it is 12.5, computer knowledge के लिए 5.5 थी, decision making के लिए 1.5, for general awareness it is 3.25, ARD it is 6.75, for ESI it is 2.25. So now here I have to add something. See, आपकी GA, ESI और ARD की ये मिनिमम कट ऑफ है, मतलब इतने आपके मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट में. बट अगर ओवरऑल कट ऑफ देखी जाए आउट ऑफ योर 100 मार्क्स, आउट ऑफ योर GA, ESI एंड ARD, दैट इज 41.75. मीन्स आपके जो टोटल ESI एंड ARD और ESI, ARD और GA के मार्क्स हैं, दैट शुड बी 41.75 एग्रीगेट. ठीक है, इतने मार्क्स आने चाहिए. तो यहाँ पे आपको मिनिमम एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करनी है, बिकॉज दिस इज योर मेरिट सेक्शन. हेयर यू ओनली हैव टू क्लियर द मिनिमम कट ऑफ. ठीक है, सो ये हो गई कट ऑफ फेज 1 की. अगर हम फेज 2 की बात करें तो in 2021 the cutoff was 118.42, and for phase 2, sorry, for 2022 it is 130.50. ठीक है, तो फेज 2 की कट ऑफ कितनी गई है लास्ट ईयर, दैट इज 130.50. यहाँ से भी एक आइडिया ले सकते हो कि ओके इतनी कट ऑफ जाती है तो आपको कितना स्कोर करना होगा इस साल. ठीक है, अगर हम ओवरऑल कट ऑफ की बात करें फॉर फाइनल सिलेक्शन के लिए, सो इन 2021 इट वाज 164.33 एंड इन 2022 इट इज 171.50. ठीक है, आप देख सकते हो इट इज अ रिमार्केबल डिफरेंस. सो इस साल भी कट ऑफ बढ़ सकती है. ठीक है, इट डिपेंड ऑन पेपर एज वेल. सो दिस इज द एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ठीक है, ये कितनी कट ऑफ जो लास्ट प्रीवियस ईयर में रही है, यहाँ से आप एक आइडिया ले लो आपको कौन से सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है और कहाँ पे whatever is your weak point, just start focusing on that. ठीक है, तो ये हो गई कट ऑफ. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज योर स्ट्रैटेजी. आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सो फॉर एनी एग्जाम, वेन एवर यू आर preparing for any competitive exam, you should know, have a clear idea about the पैटर्न ऑफ दैट एग्जाम. ठीक है, इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? वी हैव डिस्कस द पैटर्न इन द बिगनिंग, इसी वीडियो में वी हैव डिस्कस इट. ठीक है, अब ये आपको क्लियर हो गया, राइट? हमने सिलेबस, यू शुड नो द सिलेबस, हमने सिलेबस भी देख लिया क्या होता है, दैट इज क्लियर, राइट? अब रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम मीन्स यू शुड एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब एनालाइज करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट NABARD इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, व्हाट NABARD इज एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड नो this thing, what you should know for getting selection in the NABARD grade A, right? So you should have the idea कि what NABARD is requiring, what is the expectation of NABARD from me. ठीक है, so that is you can do it through PYQs, analyzing the PYQs. Then what you have to do, you have to make a practical plan and you have to be consistent. ठीक है, you have to work consistently for your goal.
सो दैट वाज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी. नाउ लेट अस डिस्कस कि आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे कैसे पढ़ना है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कवर योर एआरडी स्टैटिक सिलेबस एंड ईएसआई करंट. यहाँ पे आपको एआरडी स्टैटिक पढ़नी है पहले, एंड साथ साथ में ईएसआई करंट को पढ़ना है. ठीक है, ईएसआई करंट में आपके रिपोर्ट्स, आपकी स्कीम्स, आपकी जो जनरल अवेयरनेस के जीए रिलेटेड टू ईएसआई, वो सारा आ जाता है. ठीक है, तो आपको पहले स्टैटिक कवर करनी है, एआरडी स्टैटिक, एंड साथ में ईएसआई करंट को कवर करना है. देन after completing that, go for ESI static. Static is also important. ठीक है, static की ESI static की understanding is only going to help you in the current as well. ठीक है, तो ESI static is important. तो after that go for reading ESI static and practice English. ठीक है, English practice is important. ठीक है, English is important for phase 1 and phase 2. तो आपको यहाँ पे English को practice करते रहना है. Then after completing this, you have to start current affair of ESI and ARD. यहाँ पे भी आपने ESI current पढ़ा है. ठीक है, अब आपको ESI current के साथ साथ ARD current affair भी पढ़ना है. ठीक है, you are done with doing ARD static, ESI static. So now here you can pick up your QRE. ठीक है, Quants Reasoning English on weekends. बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दिस इज नॉन मेरिट सेक्शन, बट स्टिल यू हैव टू क्लियर द मिनिमम कट ऑफ. ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है. Then after this what you have to do, you have to read current affair daily. Current affair is important. आपके एग्जाम के एक हफ्ते पहले के भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है. सो करंट अफेयर इज समथिंग विच यू हैव टू प्रैक्टिस. ठीक है, वो आपको डेली पढ़ने हैं. देन व्हाट यू कैन डू आफ्टर कंप्लीटिंग these things, you can start practicing mock test. फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाओ, देखो, एनालाइज करो कि विच सेक्शन यू आर लैकिंग, वहाँ पे प्रैक्टिस करो. ठीक है, and prepare your decision making in computer awareness. These are also very important subject. We cannot ignore them because we have to clear the minimum cutoff here as well. So you have to, at last you can prepare your decision making and computer awareness. ठीक है, so that is your strategy. This should be your strategy for NABARD grade A for this year. ठीक है, so and also one thing which I would like to emphasize is do revision. Do revision as much as possible. See, whenever you are completing one segment na, after going to the next, you have to revise the earlier one. If you are jumping on to the next, revise this one. ठीक है, revision is should be your continuous process, because as much as you will revise the thing, you will be easily able to retain the thing, because बहुत ज़्यादा syllabus है, बहुत ज़्यादा information है, बहुत ज़्यादा data है. So to retain these things, to retain all these information, revision is very important. ठीक है, and also I would like to add here that revision, consistently revising thing will only going to help you in the examination, क्योंकि आपको उतने अच्छे से याद चीज़ें रहेंगी और वहाँ पे उतनी आपको क्लैरिटी से आप क्वेश्चन को आंसर कर सकोगे, राइट. सो दैट वाज ऑल about the strategy of NABARD grade A and about this video as well. So I hope you have enjoyed this video, and if you have, do let us know in the comment section. And if you are new to our channel, please subscribe to our YouTube channel, and also you can join us on our Telegram channel if you want to download the informative PDF regarding NABARD and NABARD examination. So that was all for this video. I hope you have enjoyed it. Thank you so much.